हेलो पिला माने आज हमें काली रो लेक्चर टा कंटिन्यू करबा जोटा कि थिला मैट्रिक्स आउ डेटा ताले हम काली रखि देथिले इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आज हमें डिटरमिनेंट आउ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स तारे एडजॉइंट मैट्रिक्स सेटो ताले आरंभ करया फ्रॉम सम स्पेशल मैट्रिसेस स्पेशल मैट्रिक्स होती idempotent matrix a square matrix is idempotent provided that equals to A. For an idempotent matrix A raised to power n is always equal to A, where n is greater than 2 and n belongs to A raised to power n is equals to A when n is greater than or equal to 2. हला माने idempotent matrix सेटा कि जाकू जारा से matrix जदि हमें power 2 आउ ताटू अधिका नबा ताले तारो आंसर सेम से नंबर टा ये से matrix पळा For an idempotent matrix A, determinant A is equals to always 0 or 1. A square, hala, and so idempotence by जो determinant A अच्छी सेटा always 0 or 1 आसे. Nilpotent matrix is said to be a nilpotent of the index P. If A raised to power P is equals to 0 and A raised to power P minus 1 is equals to not equal to 0. 0 eta hochi 0 matrix, null matrix. I.e. if P is the least positive integer for which AP A raised to power P is equals to 0, then A is said to be nilpotent of index P. माने जो raised to power is 0 टा आछे A raised to power 0 matrix. Periodic matrix, a square matrix which satisfy the relation A k plus 1 is equals to A. माने को गोटे पावर रिपीट कले सपोज A स्क्वायर A अच्छी A क्यूब रे पुणी A पळे आछे पुणी A 6 रे पुणी आउथरे A पळे आछे ताल दिस इज नोन एज ए पीरियोडिक मैट्रिक्स. एग्जांपल द मैट्रिक्स 2 -3 -5 -1 4 5 ए मैट्रिक्स हैज अ पीरियड 1 माने याकू हमें यदि स्क्वायर करबा ताले हमको पुणी ए मैट्रिक्स टा फेरी आसीबो पुणी आउथरे रेस्ट पावर 3 करबा पुणी से मैट्रिक्स हैज अ पीरियड 1 हला. So period of a square null matrix is not defined. Null matrix अछि तार period हमें define कर परिबा. Period of an idempotent matrix is always idempotent matrix of period 1 काइकना देखो तार A raised to power n is equals to A अछि ताले A raised to power 2 is equals to A raised to power 3 is equals to A 4 raised to सब equal हला. Involuntary matrix if A square is equals to I होची हमरो identity. The matrix is said to be an involuntary matrix. An involuntary matrix has its own inverse. Hello. For example, A is equals to 0 1 1 0 0 1 1 0. এটা হচ্ছে A. হ্যাঁ A ର স্কয়ার যদি আমরা করিবা A multiplied by A তাহলে हमको I মানে this is the I matrix where the diagonals have one and others are ହେଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ I which is not also known as multiplication. Okay, so next ଏବେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା determinants. Okay, development of determinants took place when mathematicians were trying to solve a system of simultaneous linear equation solve कला बेले प्रॉब्लम आसला कि यदि हमें दीटा वेरिएबल तो सॉल्व कर परिबा तीनटा भी किछि हद तक कर परिबा यदि अधिक अछि चारटा अछि पांचटा किंतु हमें इजीली ताको सॉल्व करबा सेटा साइंटिस्ट माने डिस्कवर कले मैथमेटिशियन माने डिस्कवर कले कि डिटरमिनेंट गुटे से सेम टाइप रो रिप्रेजेंटेशन एज अ मैट्रिक्स बट ऑल डिटरमिनेंट्स हैव सम वैल्यू मैट्रिक्स का किछि वैल्यू से माने डिटरमिनेंट मैथमेटिशियन डिफाइन द सिंबल a1 a2 b1 b2 और एटा दीटा लाइन भीतर अछि एज अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 and 4 numbers arranged in a row and column are called its सेम जेमती मैट्रिक्स अछि खाली तार रिप्रेजेंटेशन अलगा यदि हमें दीटा लाइन लगे देलु ताले सेटा को हमें कहबो डिटरमिनेंट रो वैल्यू अछि मैट्रिक्स रो वैल्यू नाही हला. If you write the coefficients of the equation in the form of a b c d then such arrangement is called a determinant. यदि हमरो a1 b1 a2 b2 इनसे किछि हमरो coefficients of equation अछि a b c d ताले यदि हमें ताको लिखिबा ताको determinant फॉर्म में देख परबा. In a determinant the horizontal lines are known as rows and the vertical lines same.
हला जहां मैट्रिक्स अछि द शेप ऑफ एवरी डिटरमिनेंट इज अ स्क्वायर डिटरमिनेंट सब बड़े स्क्वायर रहेगा हला so all determinants can be arranged in a square matrix but our matrices cannot be determined बुझि पारलो if defined if a determinant is of order n then it contains n rows and n columns example a determinant of second and third order vector set रे हमर matrix order करथिला n m cross n and rows multiplied by cofactor and minor of an element minor देखो minor कौन था minor कौन था minor of an element is defined as the determinant obtained by deleting the row and column for which in which that element lies. Example, the determinant D A is our determinant. Minor of A12 is denoted as minor of 12, which will be देखो A12 कोठी আছে এইটা তাহলে এইটা কাটি দিও ଆଉ यार रोटा काट दियो यार कॉलम टा काट दियो जेतिकी बनथिला A21 A23 A31 A33 सेटा हमर माइनर and so on. The cofactor of an element Aij is related to its minor as Cij is equals to -1 row power I plus j m of where I denotes the ith row and j is known as just normal definition है ना cofactor काकू करती cofactor करती -1 का power I plus j multiplied by the minor of the corresponding I out j then now we define the value of the determinant in order 3 in terms of minor and cofactor as determinant is equals to a11 minor of 11 minus a12 minor of 12 plus a13 minor of यही सेम माइनर और कोफैक्टर आमे गोटे डिटरमिनेंट को सॉल्व भी कर पाइबा काहे ना जदी हमको m11 m12 m13 रो वैल्यू जणा पड़ला व्हिच इज नथिंग बट द एटा को हमें हटेले देखो वैल्यू केमती बाहर करंती वैल्यू बाहर करबे जदी फर्स्ट रो नेला 80 प्लस लिखि दोची इजी रहबो 8 आसीबो प्लस सेकंड है जीवो माइनस तापर जीवो पुणी सिमिलरली माइनस प्लस हला एटा में फर्स्ट a11 नबा a11 नेलेरु तार रो कॉलम काट देबा रो कॉलम काटी देले एटा को क्रॉस मल्टीप्लाई पुणी एटा तळरू ऊपर ताले कोन हबो देखो जदी हमें ऊपर रु तळे आसी ताले पॉजिटिव रहबा ताले a22 मल्टीप्लाइड बाय a33 ताले कोन हबो हमर a11 a22 multiplied by a33 minus ହେଇଯିବ ଏ ତଳରୁ ଉପରେ ଆସିବ ତାହେଲେ a31 a32 sorry a32 multiplied by a23 তাহলে এটা ଯିବ ଫର୍ଷ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଏଇ a11 ଆगे ଧରିଲେ ତାପରେ a12 ନେବୁ a12 ରେ କଣ ଅଛି ମାଇନସ ତାହେଲେ ତା ଆଗରେ ଜଷ୍ଟ ମାଇନस ଲଗେଇବୁ a12 ପୁଣି ସିମିଲାରଲି ସେ रो और कॉलम को हमें कैंसिल कर देबू a12 रो और कॉलम हमें कैंसिल कलु सेठी अछि रो कॉलम कैंसिल जेतिक एलिमेंट बंचिला एटा या से मल्टीप्लाई हो एटा से मल्टीप्लाई हो सिमिलरली इनके हमें सॉल्व कर परिबा गोटे डेटा इनके हमें सॉल्व हला अब हमें से डिटरमिनेंट को माइनर और कोफैक्टर टर्म्स में लेखि पारिबा तापरे आमे जेतिकी अछु a determinant of a order 3 will have 9 minors and each minor will have a determinant of order 2 and determinant of order 4 will have 16 minors and each minor will be determinant of order 3 देखो कौन कहूची एटा determinant of order 3 will have 9 minors गोटे order 3 determinant रो 9 minors आसीबो काहे ना order 3 रो केता एलिमेंट अछि ना पर एलिमेंट रो गोटे गोटे माइनस 2 रो केतेटा आसीबो 4टा 16 टा 4टा रो केते आसीबो ह 4टा रो केते आसीबो 4टा रो आसीबो 16 टा हाँ काहे ना 16 टा एलिमेंट अछि अब ईच माइनर केते डिटरमिनेंट रो ऑर्डर हबो 3 माने माइनर यदि डिटरमिनेंट ऑर्डर n रो अछि ताले तार से एलिमेंट रो माइनर केते आसीबो n minus ताले सिमिलरली एटी कोफैक्टर इज मल्टीप्लाइड एट डिफरेंट रो कॉलम एलिमेंट्स
that results in C. देखो A11 C21 plus A12 C22 plus A13 C23 यदि हमें इमती मल्टीप्लाई करबा डिफरेंट रो कॉलम एलिमेंट्स ताले तार वैल्यू हमर 0 हे ऑलवेज रो कॉलम ऑपरेशंस वेरी इंपोर्टेंट एठो हमें किसी भी क्वेश्चन सॉल्व कर रो और कॉलम ऑपरेशन कोन रो आई को रो जे सहित इंटरचेंज करले हमर किछि चेंज हेबनी सिर्फ कॉलम आई कॉलम जे को इंटरचेंज करले हमर किछि चेंज हेब आउ आई आउ जे सेम हम रो और कॉलम यदि रो आई को हमें कॉलम आई करूछु चेंज करछु दिस कन्वर्ट्स अ रो इनटू कॉरेस्पोंडिंग कॉलम कॉलम और रो इंटरचेंज होछि तापर कोन अछि रो आई इज इक्वल्स टू आर ऑफ के आई माने k of ri about k माने हमें गोटे कांस्टेंट सहित मल्टीप्लाई करछु दिस इज नॉट r of ki दिस इज k of ri उल्टा लिखि जेम इट इज k of ki तो यदि हमें गोटे कांस्टेंट सहित मल्टीप्लाई करलो ताले भी हमर वैल्यू डिटरमिनेंट चेंज हेबा हां देन r I is equals to r sorry k of ri plus rj जो ता सहित जो मल्टीप्लाई कलु आउ किछि से गोटे तळ रो कि ऊपर रो कि साइड साइमल्टेनियस पाखरो से ता सहित ऐड कलु आ ताको रिप्लेस कलु तथापि हमर किछि चेंज हेबा नाही ए चारटा रो कॉलम ऑपरेशन अछि एटो हमें डिटरमिनेंट को इजीली छोटो करि पाइबा जोटा कि हमको इजीली सॉल्व पाइबा इलस्ट्रेशन 3 रे देखिया कोन अछि द कोफैक्टर ऑफ a12 in the following 2 6 1 minus 3 0 5 5 4 minus 7 कौन रहेगा है 1 2 a12 कौन दिस a11 a12 a12 है गले ए दिटा कट जो ए दिटा कट 6 1 4 और minus 7 को फैक्टर कौन आसीबो 6 4 1 और minus 7 फैक्टर एटा आसला ए सॉरी माइनर एटा आसला को फैक्टर कौन था को फैक्टर -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 रेज टू पावर i plus j है i plus j कौन 3 है i plus j कौन 3 3 ताले एटा नेगेटिव रहला नेगेटिव रहला ताले एटी गोटे माइनस ऐड हो तापरे एटा कोन हो -6 -4 -1 +7 यार जदी हमें वैल्यू बाहर करबा वैल्यू बाहरिबो 46 properties of some determinants determinants have some properties that are useful as they permit us to generate same result with simpler configuration जोटा हमें बाहर करू जोटा हमें किमती properties को डेराइव होची हम रो कॉलम reflection properties the determinant remain unaltered if its rows and columns change into columns and the columns are rows यदि हमें rows और column चेंज कर दवा माने इंटरचेंज कर दवा जोड़ा रोज थिला सेगुडा को कॉलम कर दवा जोड़ा कॉलम थिला सेगुडा रोज कर दवा ताले हमर डिटरमिनेंट रो वैल्यू चेंज हेबनी ऑल जीरो प्रॉपर्टी इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम्स आर जीरो देन द डिटरमिनेंट इज जीरो यदि हमें जस्ट सपोज b1 b2 b3 जीरो अछि ताले डिटरमिनेंट रो वैल्यू जीरो जीरो को भी गोटे रो के को भी कॉलम यदि जीरो अछि पूरा ताले सेडा जीरो proportionality repetition property if the elements of a row or column are proportional identical to the elements of the same row or other then माने यदि a1 a2 a3 sorry तापर c1 c2 c3 एटा जाका सेम अछि a1 is equal to c1 a2 is equal to c2 a3 is equal to c3 ताले भी अपन डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है switching property the interchange of any two rows or columns of the determinant changes its sign यदि हमें गोटे रो और कॉलम को चेंज करछु इंटरचेंज करछु ताले तार साइन टा चेंज the scalar multiple property if the elements of a row or column of a determinant multiplied by non-zero constant the determinants get multiplied by the same constant यदि हमें को भी गोटे रो को भाव याकू a1 a2 a सॉरी b1 c1 d1 को हमें 2 रो मल्टीप्लाई करू ताले जो पूरा डिटरमिनेंट अछि सेटा भी 2 रो मल्टीप्लाई हो यदि 2b1 2c1 2d1 अछि then whole determinant will be 2 times of लगा तुम कांस्टेंट को बाहर ऐड कर बेसिकली सम प्रॉपर्टी कोन a1 plus b1 a2 plus b2 a3 plus b3 आउ नेक्स्ट कॉलम अछि c1 c2 c3 d1 d2 d3 ताको हमें केमति लिखि परबा a1 a2 a3 एटा को हमें जदी अलग अलग दीटा सामने डिवाइड करलु ताले a1 a2 a3 तार गोटे पार्ट रहला तार से c1 c2 ए c और d रो कॉलम टा ता से रहला प्लस b1 जोटा तार नेक्स्ट वाला पार्ट c और d ताले हमें गोटे डिटरमिनेंट को सिंपलीफाई करबा पे हमें दीटा डिटरमिनेंट भांगी हला भांगी देले दीटा डिटरमिनेंट après properties of invariance properties of invariance कोन होची a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 will be equal to a1 a2 a3 सेम रहला
তাহলে a1 प्लस अल्फा b1 प्लस बीटा c1 b1 ଆଉ c1 ମାନେ ଆମେ ଏଇଥିରେ ଯଦି अल्फा b1 प्लस बीटा c1 ରେ ऐड भी कर देलु ଗୋଟେ पर्टिकुलर सेम कांस्टेंट ताले भी तार वैल्यू सेम रहइबो जोटा कि हमें या पछरे पड़ले रो एटा एटा हां ओके factor property if a determinant delta becomes 0 and a determinant value becomes 0 we put x is equals to alpha then x minus a is a factor of the determinant triangle property कौन होगा if all the elements of a determinant above or below the main diagonal consists of zeros then the determinant is equal to the product of a diagonal elements and that is देखो यदि a1 b1 a1 b2 c3 अछि तार तळे जदि सब 0 अछि और ऊपर किसी एलिमेंट अछि ताले ऊपर एलिमेंट किछि माने रहबनी खाली तळ डायगोनल टा मल्टीप्लाई हो a1 b2 c3 ताले एक क्वेश्चन हमें सॉल्व करबा अल्फा बीटा गामा थीटा फाई साई तापर लैम्डा म्यू आउ न्यू is equals to beta gamma just manipulation of the determinant beta alpha gamma mu lambda nu phi theta psi हमें एटा को केमती प्रूव करबा इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम्स अक्रॉस डायगोनल यूजिंग रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी देन यूजिंग द स्विचिंग प्रॉपर्टी देखो कोन एलएचएस हमें अगर एलएचएस रा कोन कलो एलएचएस हमें रोज और कॉलम इंटरचेंज कर देला रोज और कॉलम तापर कोन कलो -1 मल्टीप्लाई कलो काहे ना हमें एटा अल्फा आउ ए जो लैम्डा लैम्डा एठी देला लैम्डा दुटा कॉलम इंटरचेंज कलो -1 मल्टीप्लाई कलो इंटरचेंज तापर कोन कलो रोज को इंटरचेंज कलो ए रो जो ए रोटा तला को ऊपर आन देलो अल्फा वाला को तळे आन देलो ताले एरा हमर सिमिलर रहेगा -1 आउटर मल्टीप्लाई सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक जेमति हमें सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बाहर करथिले सेमति सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट्स भी है जोटा कि कोन रहबो determinant it is called a symmetric determinant if aij is equal to aj similarly देखो एडी aj अछि ji just सेम जो मैट्रिक्स में जहां पढ़थले एग्जैक्टली डायगोनल ऊपर किछि डिपेंड करी यदि डायगोनल ता 0 हो गला ताले जेटा स्क्यू सिमेट्रिक डायगोनल ता 0 हो गला आउ ए डेटा नेगेटिव रो कॉम्प्लीमेंट हो गला एडिटिव इनवर्स एडिटिव आइडेंटिटी देखो ए डेटा को ऐड कर 0 ताले एडिटिव आइडेंटिटी note determinant a is equal to 0 a is a singular matrix the determinant value 0 अछि ताले a is a singular matrix हां determinant a is not singular matrix सेम हमें जो प्रीवियसली मैट्रिक्स से पढ़ते दैट जस्ट एक्सेप्ट तापर हमें आसलो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट्स दिस इज जस्ट अ सिमिलर वे एज वी मल्टीप्लाइड द मैट्रिक्स देखो दुटा डिटरमिनेंट थी a1 a2 b1 b2 l1 l2 m1 m2 तो मल्टीप्लाई केमती करबा यारो रो और यारो कॉलम मल्टीप्लाई देखो केमती से हमरो जेमती हमें मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करथिलु 2 into 2 2 into 2 ताले कोन दुटा ए काट दउथिलु ए साइड रे काहे डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स हमको किसी फरक पड़ने ताले जो डिटरमिनेंट हमें मल्टीप्लाई करबु ताले सेटा सेम ऑर्डर रे रहबार सेम ऑर्डर रहले तार आंसर भी सेम ऑर्डर देखो केमती हबो a1 हमें अगर a1 ले a1 रो वाइज ले a1 ले ताले एटा l1 और l2 से मल्टीप्लाई हबो और दुटा रो एडिशन हिजो a1 जे हमें ले l1 l2 मल्टीप्लाई कलु आउ a1 l1 प्लस b1 l2 a1 l1 b1 l2 ऐड कर देली तापरे नेक्स्ट कोन आसो a1 m1 b1 m2 ऐड कर देली तापरे a2 l1 b2 l2 ऐड कर देलु a2 m1 b2 m2 ऐड कर देलु लामा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 3 ऑर्डर 3 ऑर्डर रे भी सेम रहबे देखो a1 l1 b1 l2 c1 l3 ऐड हो a2 l1 b2 m1 तापरे c2 l ऐड हो a3 l1 b3 l2 c3 l3 आ जदी हमें नेक्स्ट हो जवा b1 जदी हमें एमती कल तापरे b सेम a m1 b m2 c तापरे a2 m1 ऐड हो
ताले यार हमें रो वाइज जीव यार कॉलम वाइज जीव और ऐड कर चलते हम as r to c1. This is also known as r to c. The two determinants to be multiplied must be of same order. Two determinant जोटा अच्छी दीटा determinant सेटा हमें यदि multiply करिबा ताले तार order same रहइबा दरकार हला same रहले हमारा determinant multiply हे पाए to get T-Mn term in the mth row and nth column the product take the m row of the first determinant and multiply it by the corresponding terms of the nth column of the second and then same जरा हमें to point just ताको हमें word form में लिख लिया ये हमको और easily हमें जानी पाएगा. This method is the row by column multiplication rule for the product of two determinants of n order determinants. If delta dash is a determinant formed by replacing the element of delta of order n by the corresponding cofactors, then delta dash is equal to delta n minus 1. And delta dash is known as the reciprocal of delta. This is a self-explanatory statement. हमें पढ़ी की भी आराम से बुझ तापरे आसलो हमें मेन पार्ट adjoint of a matrix. What is a adjoint of a matrix? Let the determinant of a square matrix A be এটা আমার representation. Then A is equal to এতে কি হবে? Determinant of A is equal to এতে কি? The matrix formed by the cofactor of the elements of A is এতে কি? Where A11 is equals to আমার এটা minor. This is what? This is minor. This is how we find cofactor from the form. তাহলে এটা আমার বাড়ি হলো cofactor of 1 1. Similarly cofactor 1 2 cofactor 2 1 सब बाहर करो. তাহলে তাকো ଆମେ କଣ କରିବୁ এই ଆମେ 2 3 হ্যাঁ 3 2 ସବୁ ବାହାର କଲୁ ତାହେଲେ then the transpose of the matrix of cofactor is the adjoint of the matrix A and it is written as adjoint A. Adjoint A कौन है A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 just এই জিনিসটা উঠেগি এটা মানে রোজটা কলামে গেল কলামসটা কমে গেল জাস্ট তারা ট্রান্সপোজ করবেন হ্যাঁ তাহলে সেটা আমার adjoint A. The matrix of the product of the matrix A and its adjoint is equal to the unit matrix multiplied by the determinant A. ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ matrix हो ତାର adjoint ସହିତ multiply କରିବୁ ତାହେଲେ ସେଟା କଣ ହେଇଯିବ that will be equal to the determinant A multiplied by unit matrix. Unit matrix कौन था I है ना just एटा तार proof दिया है ताले adjoint हमें बुझी गले कौन adjoint कौन cofactor नेबो बाहर करिवो तापरे से cofactor रो matrix बनेबो matrix बनाला पारे तार transpose ने गले सेटा adjoint. Inverse of a matrix. Inverse of a matrix कौन था if A and B are two square matrices of the same order such that AB is equals to BA is equals to I where I is unit matrix. Unit matrix আমি জানছি then B is called the inverse of A that is B is equals to A inverse and A is the inverse of B and vice versa is also. The condition for a square matrix A to possess an inverse is that the matrix should be non-singular. Very important. Matrix non-singular এবার আছে কালে আমি পড়লে. If A is a square matrix and B is its inverse, then A multiplied by B is equals to I which is unit matrix. Taking determinant on both sides, তাহলে determinant যদি আমরা দুইটা সাইডে নেবা তাহলে A B is equals to I র determinant or A determinant B determinant is equals to I matrix. From this relation, it is clear that A is not equal to 0, then the matrix is non-singular. It is just proof of that the matrix is non-singular. To find the inverse of a matrix by using adjoint matrix, we know that adjoint हमें बाहर कर लो. Adjoint कौन था A multiplied adjoint আমার था cofactor बाहर कर लो cofactor को matrix फॉर्म में लिख लो तारा ट्रांसपोज में कर लो ताले adjoint ताले matrix A multiplied by its adjoint is equal to determinant of A multiplied by the unit matrix or A multiplied by adjoint A divided by the determinant A is equals to unit matrix. Therefore, what हमें जानचे A multiplied by A inverse is equals to unit matrix ताले unit inverse matrix कौन है जीवो inverse matrix है जीवो 1 divided by A raw determinant
मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए बाहर करबा तापर ताको तार डिटरमिनेंट रो डिवाइड कर देला हमर इनवर्स मैट्रिक्स बाहर। वेरी सिंपल फॉर्म। यदि एडजॉइंट बाहर करबा हम कर देलु तार तार इनवर्स हम इजीली बाहर कर देबो। इफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए इज दिस एंड इट्स A and this is the matrix this, then A inverse is given. देखो सोल्व करें A एटा को हम B नहीं लिया A B is equals to CH हाँ therefore B inverse A inverse is also equal to C inverse, then A inverse is equals to B multiplied by C. By using the formula we get the value of A inverse as a ताले हमको C और B जाना अछि ताले यार हमें इनवर्स नहीं दिबा C रो इनवर्स नहीं गले ताको B रो मल्टीप्लाई कर देले हमको मैट्रिक्स बाहर जाए। इनवर्स केमति बाहर करबा तारा एडजॉइंट बाहर करबा। एडजॉइंट केमति बाहर करबा कोफैक्टर बाहर करबा। कोफैक्टर बाहर कले 3 रो कोफैक्टर कोन 3 रो कोफैक्टर कोन आबो 1 आबो 3 रो कोफैक्टर will be equal to 1, 2 रो कोफैक्टर will be equal to 1, 1 रो कोफैक्टर will be equal to 1 आउ 1 रो कोफैक्टर is equal to 1 1 1 1 1 कोफैक्टर है ताले हमको जाना अछि केमति बाहर करबार अछि ताले कोन आबो जस्ट तारो हमें ट्रांसपोज निका देखो 1 1 2 0 which is B multiplied by 3 2 1 1 रो इनवर्स इनवर्स हमें केमति बाहर करू एडजॉइंट नहीं जिबा डिवाइडेड बाय तारो वैल्यू हां एडजॉइंट नहीं गले तार वैल्यू डिवाइड कर देले ताले हमको ए मैट्रिक्स आसी वाला दिस इज द मैट्रिक्स अब हम मल्टीप्लाई कर देले ताले हमको ए मैट्रिक्स वेरी इजी सिस्टम ऑफ इक्वेशन देखो मैट्रिक्स आर डिटरमिनेंट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पार्ट व्हिच इज सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हेलो कौन सा सिस्टम ऑफ इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन माने a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c. এটা হচ্ছে সিস্টেম অফ টু ভেরিয়েবলস ইনক্লুড থ্রি ভেরিয়েবলস কোন হবে a1x plus b1y হ্যাঁ plus c1z plus d1 is equal to 0 তাহলে हमको তিনটা ইকুয়েশন দরকার ହେଲା ତାପରେ କଣ ହବ ତାପରେ हमको ଦି टाइप ର इक्वेशन मिलिବ गोटे ଅଛି कंसिस्टेंट ଆଉ गोटे ଅଛି इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट कोन कंसिस्टेंट माने से सिस्टम ऑफ इक्वेशन ର सॉल्यूशन ଅଛି इनकंसिस्टेंट माने सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन केमति बाहर करबा यदि इनकंसिस्टेंट अछि a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by जो कांस्टेंट अछि तार रेशियो इक्वल आसीबन दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पैरेलल डिसजॉइंट लाइन माने ए इक्वेशन कोन रिप्रेजेंट करिते एटा गोटे लाइन तार पैरेलल आ गोटे लाइन ताले कोठी केबे कोठी मीट करूनी ताले यार नो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन सिमिलरली हमर जो कंसिस्टेंट अछि कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन तो दीटा टाइप रो गोटे आछो यूनिक सॉल्यूशन आ गोटे आछो इनफाइनाइट इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ इनकंसिस्टेंट हम इजीली कर परबा कि पैरेलल अछि पैरेलल लाइन जदी अछि सुपर इंपोज होछि माने a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 यदि तीनटा जाक सेम होछि रेशियो ताले सेटा आइबो इनफाइनाइट सॉल्यूशन लेकिन लाइन ही सेम आ जदी कांस्टेंट ता सेम होनी कांस्टेंट रेशियो c1 by c2 ताले सेटा कोन हल पैरेलल अछि किंतु सुपर इंपोज माने ता ऊपर हो साइड रे अछि किछि डिस्टेंस पारे कि आउ केते दूर पारे से पैरेलल लाइन ता जाउछि केबे मिसे यूनिक सॉल्यूशन रे कोन हबो a1 by a2 is not equal to b1 by b2 यदि एई कंडीशन आसीला हमरो इक्वेशन ता सॉल्यूशन ता यूनिक आसीबा माने गोटे ही सॉल्यूशन आसीबा कि लाइन ता इमिति हे जागा एडा गोटे लाइन से आर लाइन ता इमिति गोटे कट करबो ए जगह रे यूनिक सॉल्यूशन हला the solution to the equation is given by x is equals to delta 1 by delta y is equals to delta 2 by delta or x is equals to b1 c1 b1 c2 minus b2 c1 by a1 b2 minus a2 b1 and y is equals to a2 c1 minus एटा में 10 9th और 10th क्लास में पढ़ी थी मैंने minus a1 c1 a1 c2 divided by a1 b2 minus a2 b1 ताले
एटा होची सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये अच्छी सॉल्यूशन where delta 1 is this, delta 2 is this, and delta is this. delta रे कौन अच्छी a और b अच्छी, delta 1 रे कौन अच्छी b और c अच्छी, और delta 2 रे कौन अच्छी c और a अच्छी ହେଲା इजीली जान ଏବେ ଯଦି ତିନିଟା ଭେରିଏବଲ ଆସିଗଲା ତାହେଲେ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ लेकिन ଆମ ପାଖରେ ତିନିଟା ଇକ୍ୱେସନ ଆସିବ ତିନିଟା ଇକ୍ୱେସନ ଆସିଗଲେ କଣ ହେଇଯିବ ଆମର ଡେଲ୍ଟା କଣ ହେଇଯିବ डेल्टा ହେଇଯିବ a b c डेल्टा 1 ହେଇଯିବ d b ଆଉ c डेल्टा 2 କଣ ହେଇଯିବ a d ଆଉ c और डेल्टा 3 କଣ ହେଇଯିବ a b d एटा हमको माने रखिବାକୁ पड़िବ ई now the following algorithm to solve the system first delta ର value କଲ delta ए delta ର value ଯଦି 0 ଆସିଗଲା ତାହେଲେ କଣ ହବ ଦିଟା ପାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଦିଟା ପାର୍ଟ ହେଇଗଲେ at least one of delta 1 and delta 2 is not 0 ଯଦି delta 1 delta 2 और delta 3 तो କିଛି ବି ଗୋଟେ 0 ହେଲାନି ତାହେଲେ inconsistent system ର କିଛି solution ଆସିବନି ଯଦି ତିନିଟା ଯାକ 0 ହେଇଗଲା ତାହେଲେ put z is equals to t and solve any two equations to get the value of x y in terms of t ତାହେଲେ z ଜାଗାରେ z ଜାଗାରେ t put କରିଦବ ହଁ and solve any two equation दुईटा इक्वेशन सॉल्व कर दो आंसर बाहर जाए और यदि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 ये जो डेल्टा আছে a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 इज नॉट इक्वल टू 0 আছে তাহলে সেটা কনসিস্টেন্ট তাহলে তার ইউনিক সলিউশন আসবে তাহলে x কোন আসবে ডেল্টা 1 বাই ডেল্টা सिमिलरली y कोन আসবে ডেল্টা 2 বাই ডেল্টা z কোন আসবে ডেল্টা 3 বাই ডেল্টা और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ର ভ্যালু हमको জানা এবার দরকার আছে এটা हमको ঘষিবার আছে এই পার্টটা हमको ঘষিবার আছে दिस मेथड इज आल्सो नोन एज क्रैमर्स ये मेथड को हमें डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 और डेल्टा वाला रूल को हमें कौन को क्रैमर्स क्रैमर गुटे साइंटिस्ट ने बाहर कर नोट if delta is equal to 0 and delta 1 delta 2 delta 3 is also equal to 0 then the system of equation may or may not be consistent हाँ हे भी पारिबो consistent हे not be पारिबो any possibility if the value of x y and z in terms of t satisfy the third equation then the system is said to be consistent and have infinite solution माने parallel है वाला if values of x y z don't satisfy the third equation then system is said to be inconsistent यदि x y z satisfy करने third equation को ताले सेड़ा no solution रे पड़ा no solution inconsistent हला if d1 d2 d3 d1 is equal to d2 is equal to d3 is equal to 0 the system of linear equation known as homogeneous linear equation ये constant टा 0 है वाला तो ऐसा को homogeneous है then it possesses at least one solution that is 0 0 0 homogeneous of good solution always will be 0 0 0 this is also known as reverse solution for homogeneous linear equation reverse solution कौन है 0 0 0 if the system of homogeneous linear equation possesses non-zero or non-trivial solution and delta is equal to 0 in such case the given system has infinite solution delta 0 अच्छी ना देखा delta 0 अच्छी आउ d भी 0 अच्छी ताले infinite solution we can also solve this solution using the matrix inversion method and we get a matrix अगर एटा में पढ़ जाता है matrix a is equals to a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 x is equals to x y z and b is equals to d1 d2 now the solution set to be obtained by solving x is equals to a inverse of multiplied by b or ax is equals to b যদি ଆମେ ବାହାର କରିବା ଆଉ ତାକୁ ଆମେ manipulate କରିବା using rows and column operation ताले ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରି ପାରିବା let the equations be a1x plus a2y plus a3z and d is equal to z जोटा तीनटा equation अछि where the above equation as this is a this is x and this is b a x b ax is equals to b where a is this x is this and multiplying it by a inverse we get a inverse a x a inverse b which is equal to I which is unit matrix multiplied by x is equal to a inverse of b which gives x is equal to a inverse of b solution to the system of linear equation
A set of values x, y, z simultaneously satisfy the equation is called the solution of system of equation. Hence, here the set of values this is the solution of linear equation. Keep this solve kolu, etre pakai delu, manipulate kar delu. Row of column operation ଆମେ ପକେଇଲୁ, row of column operation ହେଇଗଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ 1 ଆସିବ, ଏଇଠି 1 ଆସିବ, ଏଇଠି 1 ଆସିବ, ତଳେ ସବୁ 0 0 0 ହଁ ଏଇଠି 0 B1 0 କରିବାର ଅଛି, C2 0 କରିବାର ଅଛି, C1 0 କରିବାର ଅଛି, ଆଉ A1 B2 C3 1 1 1 ଏମିତି ଆସିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ କରିକି ଆଣିଦେଲେ ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର ଇଜି। consistent equation କଣ? consistent equation ହଉଛି if the system of equation has one or more solution then it is said to be consistent ହେଲା, otherwise it is inconsistent। ଯଦି ତାର solution ନାହିଁ ସେଟା inconsistent, ଯଦି ତାର solution ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଛି, ଦିଟା ଅଛି କି infinite ଅଛି, ସେଟା consistent ହେଲା। condition for consistency of system of linear equation is determinant of A is not equal to 0, then the system is always consistent and has a unique solution। ଆମେ ଏଇ ଚीजଟା ପଢିଥିଲେ। Right, unique solution। If A is equal to 0 and adjoint of A, B, A multiplied by B is not equal to 0, then system is inconsistent। If A is equal to 0, determinant of A is equal to 0 and adjoint of A, B is equal to 0, system is consistent has an infinitely many solutions। Just a simplified version of this। ଏଇଟା ଆମେ ଟିକେ complicated ଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ simplify କରିଦେଲୁ by making use of the matrix theory। हाँ, simplify କରିଦେଲୁ। Note, Ax is equal to 0 is also known as homogeneous system। ଯଦି ସେ ଯୋଉ B ଟା ଯୋଉଟା କି D1 D2 ଦେଇଥିଲା 0 ହେଇଗଲା ସବୁବେଳେ homogeneous ତାକୁ କହିବ। homogeneous equation are always consistent। ତାର ଗୋଟେ solution ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ trivial solution କହୁ, that is 0 0 0। The system has non-trivial solution if determinant of A is equal to 0। non-trivial ମାନେ 0 अलावा भी କିଛି ଅଛି, ଯଦି determinant of A is equal to 0 ଆସିଗଲା non। theorem 1 କଣ କହୁଛି? theorem 1 କହୁଛି Ax is equal to B, be a system of linear equation where A is a coefficient matrix। if A is invertible then the system has unique। A is invertible given by Ax is equals to A inverse, ତାହେଲେ ତାର unique solution ଅଛି। proof, ଏଇଟା ତାର proof ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିରେ proof ଟା ଗୋଟେ ଥର ଦେଖିଦବ। ତମକୁ main ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଯଦି ଏଟା invertible ଅଛି, inverse ବାହାର କରିପାରିବ, ତାହେଲେ ସେଟା ତାର unique ରହିବ। uniqueness, if Ax is equals to B has two sets of solution x1 and x2, then Ax1 is equals to B and Ax2 is also equal to B, each equal to B। therefore Ax1 is equals to Ax2 by cancellation of x1 is equal to x। hence the given system Ax is equal to B has a unique solution। note, a homogeneous system of equation is always consistent। जानने illustration, the system of equation 3 5 2 minus 2 minus 8 1 1 in A x y z, B 3 or minus 1 has no solution if A and B are no solution ଅଛି, no solution ର condition କଣ ଦେଖ, inconsistent। determinant କଣ ହବ, A ର 0 ଆସିବ, କଣ କରିବା, determinant ବାହାର କରିଦବା, ଏଇଟା determinant is equal to 0, ସେଠୁ A ର value ପଳେଇ ଆସିବ ହେଲା। first ତାପରେ adjoint A multiplied by B should not be equal to 0। adjoint A multiplied by B should not be equal to 0। not be equal to 0 ରେ ଆମର B ର କିଛି values ଆସିବ, ସେଇ value ରେ ଯୋଉଥିରେ 0 ଆସୁଛି, ହଁ ତାହେଲେ ସେଇ value ଅଲାवा ଛାଡିକି B ର ସବୁ value ରେ ଆମର no solution ଆସିବ। ତାହେଲେ ଏଇ condition ଆମେ use କଲେ ସେଇଠୁ ଏଇ question ଟା easily solve କଲେ। next question, solve the following linear equation। ଏଇ ଦୁଇଟା equation ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ solve କରିବାର ଅଛି। କେମିତି କରିବା solve? linear equation ଅଛି ନା, ତାକୁ solve କେମିତି କରିବା? ଏଇଟାକୁ A ନେଇଯିବା, ଏଇଟାକୁ B ନେଇଯିବା, similarly ଏଇଟାକୁ ଏଇ ଯୋଉ x
प्लस 5x एटा को a एटा को b ले जा तापर हमें नॉर्मल हमर सॉल्व कर दवा लास्ट खाली a और b रो वैल्यू पका दवा a रो वैल्यू कोना x + 5 b रो वैल्यू कोना y + 7 a रो वैल्यू असला -1/2 b रो 1/3 जस्ट एडी पका दले आंसर मारी गल x और y ताले हमको मेन कोन मन रखले जेडा मन रखले हमें इजीली बाहर कर परबा को भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जल्दी से मैंने दिया है कि कंसिस्टेंसी बाहर करवार थी मतलब मैं इजीली बाहर कर वेदर दे आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट और आज डेफिनेटली मैंने सॉल्व हो তাহলে আজিର ক্লাস এইটি সরিলা আমার ম্যাট্রিক্স ডিটারমিনেন্ট চ্যাপ্টারটা সরি দিও এইটা वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर काकना एठरो JEE-Main रे गोटे ना गोटे क्वेश्चन निश्चय खाली जदी एटा हमर क्लियर अछि वेरी इजी चैप्टर खाली तुमको मल्टीप्लिकेशन टिके मन रखियार अछि हला एडजॉइंट टिके मन रखियार अछि यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करे सेति मन रखले हमरो इजीली एक चैप्टर गुडा को सॉल्व कर चैप्टर को भी क्वेश्चन हमें सॉल्व कर वेरी इजी ताले एटा कोन करबा अछि मल्टीप्लिकेशन रो प्रैक्टिस करिवो तापरे एडजॉइंट इनवर्स केमति बाहर करछि तार प्रैक्टिस करिवो आउ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन इनफ क्वेश्चंस लगेले हमको से थ्योरम गुडा को मन रह जिवो आ कंडीशन गुडा को मन रह जिवो सेटा मन रह गले हमें को भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर परबो बुझि पारलो दिस इज हाउ वी ताले पिला माने प्रैक्टिस करू तो प्रैक्टिस करू तो आउ रिवाइज करू तो एटा बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर लेकिन गोटे क्वेश्चन आसो ए चैप्टर ता भलके कर देले अपन पीडीएफ 3 नंबर तो सिक्योर हो जिवो 3 नंबर सिक्योर गले एमती 3-4टा चैप्टर कर देले ताले तमरो मिनिमम मैथमेटिक्स रे तो 30-40 नंबर आराम रे सिक्योर हो जिवो तापरे जेति कि बाबा बाकी चैप्टर गुडा को अछि से चैप्टर गुडा कर पढ़ी पढ़ी हमें आउरी 30-40 नंबर ताले 100 रु यदि 50-60 नंबर तमे आनुच दैट इज इनफ सेटा तुमको आराम रे गोटे सीट हैला ताले पढुथ आउ प्रैक्टिस कर जा मु बतेली सेटा कर आउ ए नोट्स गुडा को तमे गोटे पेपर रे लिखि नोट्स गुडा को रख शॉर्ट नोट्स बना ताको रिवाइज कर हो आज क्लास एडी सारिबा थैंक यू वेरी मच प्रैक्टिस कर बाय